जाने आलम खाकी टीवी देखने वाले नाजरीन को यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से गुड मॉर्निंग और दीगर टाइम्स के लिहाज से मैं आप सबको हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते वगैरह 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 कहना चाहूँगा। आपके कंट्री में जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसी हिसाब से मैं आपको गुड मॉर्निंग और वेलकम करता हूँ। आप जानते हैं कि मैंने इस वीडियो के ज़रिए जो भी हमारी ज़िंदगी में अहम रोल अदा करते हैं, हमारे सोसाइटी को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो उनको सेलिब्रेट करने का सिलसिला शुरू किया है। और इस सिलसिले में इससे पहले जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक देखा है, आपने सुना होगा वो एक्सेप्शनल अचीवर्स भी हैं और जो कॉमन अचीवर्स हैं वो भी हैं और सिंपल लोग भी हैं जो खुद अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी जिंदगी की कदर करते हैं और अपनी जिंदगी से कुछ न कुछ दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो इस लिहाज से आज मैं आपके पास एक काबिल कदर मेहमान लेके आया हूँ और वो मेहमान है अमीना बेग। और ये जो है एक पावरफुल एजुकेटर हैं। इनके लाइफ से हम होप करते हैं आज के इस वीडियो में इनसे सुनेंगे कि ये क्या करती हैं, कहाँ से कहाँ पहुंची हैं, इनके करंट एंगेजमेंट्स क्या हैं। तो इस लिहाज से मैं आपके खिदमत में अमीना बेग को प्रेजेंट करता हूं और मैं अमीना बेग को वेलकम करते हुए आप सबके बिहाफ पे ये पूछना चाहूँगा कि अमीना बेग साहिबा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल एंड वेलकम टू दिस प्रोग्राम। आप ये बताएं कि आप अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपना इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहेंगे? प्लीज ओवर टू। Yeah, thank you so much, Dr. Khaki. First of all, I would say कि I am humbled and honored कि आपने मुझे invite किया for this discussion. I was excited जब मुझे आपका invitation मिला, and yeah, as you introduced me that my name is Amina Baig. Basically, I am from Hunza Karimabad, लेकिन because my father was working in Gilgit, so I am born and raised in Gilgit. और मेरी जो बेसिक सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन थी वो मैंने गिलगित के एक प्राइवेट स्कूल से किया। एंड आई वुड से कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स हार्ड वर्क एंड देयर ट्रस्ट ऑन अस, दो दे वर हैविंग अ बिग फैमिली और उनकी फैमिली में अराउंड 7 गर्ल्स एंड वन बॉय पैदा हुए। तो इवन देन दे shared equal access to education to all their children because I got admission in Aga Khan Higher Secondary School और Aga Khan Higher Secondary School में उस ज़माने में admission मिलना was a big thing, so it was an achievement, I would say. उस time पे एक achievement consider की जाती थी and everybody was desiring कि हमें admission मिले. So I was privileged enough and I was honored कि मुझे वहाँ पे admission मिला. And I completed my 2 years of intermediate education from Aga Khan Higher Secondary School, Karachi. And from Aga Khan Higher Secondary School, I continued my education in the field of medical sciences, or I studied microbiology and physiology from Karachi University. And then I completed my first master's in physiology. So my introduction would be mix and match of my educational achievements and my professional experience, क्योंकि मैंने पढ़ाई के साथ साथ जो है वो अपना काम भी जारी रखा और wherever I felt like कि अभी मुझे professional education लेने की ज़रूरत है in order to perform excellently. So I continued with my education in between. So wherever I would be talking about my educational experiences, I would be also mentioning my professional experiences as well. So after my first master's, मेरा ये था कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं गिलगित वापस जाके और हुंजा वापस जाके वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में काम करूँ।
But when I went there with a physiology, masters in physiology की degree के साथ, I realized कि जो मैंने पढ़ा है उसकी application के लिए there are no big hospitals, there are no well-established laboratories there. जहाँ पे मैंने जो कुछ भी सीखा है theoretically, I could apply that there. So it made me realize कि अब तो मुझे अपनी field change करनी चाहिए. So because physiology, biology की एक further branch है, so I realized कि अब तो मैं एक school में as a teacher I can start my career. So वहाँ पे एक private school में I started my career as a teacher, and luckily बहुत सारे teachers में I was performing very well because academically मेरा जो एक journey रहा है वो बहुत ही अच्छी as compared to I would say कि other students. मैं above average student थी and I was performing very well in my school and college and university. So उस experience की basis पे I performed very well, and जब मैंने teach करना शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा. I was like, oh, this is something very interesting and you can change the lives of your students. और वो जो मैं बच्चों के face पे एक smile देखती थी after delivering my lesson, though I was not a trained teacher that time, लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी satisfaction होती थी. और जब मैं class से बाहर निकलती थी, students were surrounding me like anything. कि मिस आपके लेसन में बहुत मजा आया और आप हमें ब्रेक में भी पढ़ाएं, हमें ये सवाल भी सिखा दें. तो that made me realize कि if I really want to be a very good teacher, मुझे अपनी education जो है वो मजीद कंटिन्यू रखनी चाहिए. और आपको पता है कि आगा खान यूनिवर्सिटी में जो एमएड प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, that is one of the best programs in Pakistan. So I thought कि I should put my application for that, and luckily फिर merit पे जो है वो मैं select हो गई एमएड प्रोग्राम के लिए 2010 में. And after my journey, or I would say experience of teaching in a private school for 2 years, I enrolled myself in a M.Ed program at IED. So IED में फिर मैंने अपना M.Ed किया and वो teacher education में, and फिर अपना research किया. I would say कि वो जो 2 साल थे उसने मुझे बहुत एक different तरीके से transform किया. मेरे लिए एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक लिमिट नहीं रहा. उसने मेरे लिए एक ब्रॉडन माय होराइजन्स कि हाँ, एजुकेशन तो एक समंदर है, उसमें तो you can perform wherever you want. Like you can be a researcher, you can be a manager, you can be a policy analyst, you can be a quality assurance specialist. So मेरे लिए एक multiple fields open होते गए. तो आई वुड से कि उस मास्टर्स के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि आई कैन बी अ वेरी गुड रिसर्चर. सो व्हेन आई वाज डूइंग माय लास्ट असाइनमेंट एट आईईडी, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम AKSP. AKSP उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन फंडेड एक प्रोजेक्ट चला रहा था और दे वर लुकिंग फॉर सम कॉम्पिटेंट पीपल जो कि उनके लिए करिकुलम डेवलप कर सके, रूरल करिकुलम डेवलप कर सके. So I got that opportunity and I started working with AKSP. And उस opportunity के through I got a chance to look into the curriculum और फिर rural context of Pakistan में जाके data collect करना और लोगों से interact करना, different educationist के perspectives को explore करना. तो around for I would say 2.5 years तक I was working with AKSP, and I would say कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी achievement थी, because at the end of the day I was able to complete the assignment independently, though initially the idea was somebody is going to supervise me, but considering my potential and my talent, it has been decided that I am going to lead that project. So yeah. So I successfully completed that project, and meanwhile, because that spark was there, that
इंटरेस्ट वाज देयर कि मुझे मजीद इसमें आगे जाना है, एजुकेशन की फील्ड में आगे जाना है और मजीद एक्सप्लोर करना है। अब मुझे कंपैरिजन, मेरे दिमाग में कंपैरिजन भी चल रहा होता था कि डेवलप कंट्रीज में क्या हो रहा है, हमारे रूरल कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान के जो डेवलप सिटीज में पॉलिसी इस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, करिकुलम इस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्लासरूम में टीचिंग प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, तो डेवलप कॉन्टेक्स्ट में किस तरह की चीजें चल रही हैं। सो दैट सही, मेड मी to put my application for Australian Award Scholarship. क्या बात। And yeah, so in 2014, I applied for Australian Award Scholarship, and after a rigorous and robust procedure, I was shortlisted for that. And I went to Australia, and I did my another master's in educational leadership. And ओह, yeah, उस master's program में I was able to look into policy from local to global. That was something very interesting for me कि excellent, वो जो मेरा एक ड्रीम था कि आप पॉलिसीज को देखें, आप लोकल क्या हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या ग्लोबल हो का, रहा है, तो वो सारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी रही। और and I ended up very well with flying colors, I would say. वहाँ पे based on my performance मुझे distinction मिला, and I yeah, congratulations, Mark. thank you, Okay. thank you. Yeah, and then I returned to Pakistan because एक मेरे अंदर वो एक जज्बा भी बहुत ज्यादा है भी, और उस वक्त और ज्यादा था कि मुझे अपने कंट्री में कंट्रीब्यूट करना है, अपने कंट्री को इम्प्रूव करना है। सही, Though there were a number of my friends who were suggesting me कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, you should stay back, ऑस्ट्रेलिया में रहो, इमिग्रेशन ले लो, अच्छा, but yeah, but I said कि no, अगर everybody will be staying back, so who is going to improve the country? right. So with this aim and with this dream, I returned back to Pakistan, और वापस मैं गिलगित चली गई, और वहाँ पे वर्ल्ड लर्निंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके साथ आई स्टार्टेड माय जॉब। और अगेन दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी कि मुझे बल्तिस्तान के बिल्कुल रिमोटेस्ट गांव से लेकर रेजर के और यासीन के बिल्कुल लास्ट गांव से लेकर हुंजा और चुपुरसन, इस तरह के गांव से लेकर हर गांव को देखने का, उनके डायनेमिक समझने का, वो ट्रैवल के सारे चैलेंजेस को देखने का, एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला। और I was able to develop the capacity of practitioners on assessment practices there. And yeah, I worked with that organization for quite some time, and then I got another opportunity जिसमें there was an inclusive education system जिसको मैंने head किया as a CEO for 2 years. Wow. And yeah, during that experience again मुझे एक और perspective education का नजर आया कि how हमारे region में inclusive education की कितनी need है, कितने हमारे differently able children हैं जिनकी education पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और किस तरह से we can help parents understand this thing के by differently able का मतलब ये नहीं होता कि they are unable to do anything. If you are going to provide them opportunities, if you are going to equip them with the facilities, they will be able to perform well. At least वो अपने जो basic life की necessities हैं उनको तो पूरा कर सकते हैं. So that was another experience, and I would say कि वो journey भी बहुत full of learning थी, and I was able to had a group of teachers and group of staff who was working for special children. और उसके बाद जो है वो because I spent around 4 years after my masters from Australia in Gilgit, I decided कि अब थोड़ा context change होना चाहिए, अब थोड़ा
या better आई exposure सेड और बेटर एक्सपोजर हो, आपकी कंट्रीब्यूशन का लेवल लोकल से रीजनल की तरफ चला जाए, रीजनल से नेशनल की तरफ चला जाए। तो उस लेडर को फॉलो करते करते आई ट्रेवल टू इस्लामाबाद एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद यूनेस्को एंड यूनेस्को में आई वर्कड फॉर गर्ल्स राइट फॉर एजुकेशन। इट वाज मलाला फंडेड प्रोजेक्ट और उसमें आई डेवलप द कैपेसिटी ऑफ फेडरल डिपार्टमेंट कि किस तरह से आप क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग को इंश्योर कर सकते हो। मैंने स्कूल हेड्स के साथ बहुत क्लोजली वहाँ पे काम किया। एंड अगेन या so I think this introduction has been lengthier than you were expecting, and I really बिल्कुल बिल्कुल I expect all these things to say. Earlier on you were mentioning that there was some life profiling of your achievements. आप इसके बारे में बात करेंगे? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था या ये पाकिस्तान में कहीं हुआ था? I mentioned about my Australian Award scholarship experience at Australia, जिसमें I got distinction and the जो last में मैंने research paper present किया था, it was all about monitoring and evaluation mechanisms for developing countries. On the basis of that and my academic performance throughout the year, I was being allocated distinction in my course. और डिस्टिंक्शन के साथ में पाकिस्तान वापस आई थी एंड दैट वाज आई थिंक एन अचीवमेंट इन माय लाइफ जो कि वर्थ मेंशनिंग है। या आपने आपके लाइफ को फिर डॉक्यूमेंट किया था किसी ने या आप का बताए थे कि आपको कुछ प्रोग्राम डेवलप हुआ था आपके लाइफ प्रोफाइल पे? Yeah, exactly. In order to set a precedent and example for the students who are qualifying for Australian Award Scholarship, different request ki they really want to have documentary on my experience of Australian Award Scholarship. So the